starting with class prices, then non-matching name, not too far replacement, and then उसके बाद smaller, smaller, small, smaller, and then normal is good, unmedian. आई होप अनमीडियन तक तो तुम लोग उतना नहीं पहुंच पाए होगे क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग फेज है, प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तुम में से कौन कौन सेकेंड ईयर में अभी बता दो मुझे, चैट में बता दो या फिर। Yeah, so hello everyone. I will be starting with the first problem. Let me present it. Okay, so is everyone able to see the problem? I guess yes. Uh, so the first problem is glass prices. So Chef is buying spectacles and is now deciding on which frame to purchase. Chef has narrowed his options down to two choices: a plastic frame that costs X rupees and a metal frame that costs Y rupees. Chef will buy the metal frame if and only if it costs at most twice the price of the plastic frame. Otherwise, he will buy the plastic frame. So, can you decide which frame the chef will buy? This is a really straightforward problem. You are given two integers x and y, and x is the price of a plastic frame and y is the price of a metal frame. So I have to basically decide whether the chef will be buying metal frame or a plastic frame. The condition is that it costs at most twice the price. If the metal frame is costing at most twice the price of the plastic frame, I will buy that. I will buy the metal frame. Otherwise, I will buy the plastic frame. So this is a really simple problem just based on conditions. So the only thing that you need to do here is the condition which is given is that I will buy the metal frame. Where is the question? Okay. So I will buy the metal frame if it costs at most twice the price of plastic frame. So using this line, I can frame the inequality that if my uh, metal frame cost is basically less than or equal to twice the cost of plastic frame. In this case, I will be buying the plastic frame, metal frame. Otherwise, I will be buying the plastic frame. So this is pretty much it for the first problem. Like, this is the main logic part and this is the code. So just don't look at the input output. This is a Java code. So I have taken x and y as input. I have checked if y is less than equal to x because y is the price of the metal frame and x is the price of the plastic frame. So if y is less than equal to 2x, I will buy the metal frame. So according to the question, I needed to print metal. So I printed that. Otherwise, I need to print plastic. So that's about it for the first problem. Like, really, really simple. So does anyone have any doubts? I don't think, because it's a really simple problem. So can I move ahead? I think I can move ahead. Okay. So let's solve problem B now. Um, Non-matching name. Alice and Bob invented a brand new algorithm, but they can't decide what to name it. Alice suggested the name SA, and Bob suggested uh, the name SB. SA and SB both are strings of lowercase English letters. So this is an important thing, that SA and SB, they are basically strings of lowercase English letters. However, Alice thinks ki Bob's naming sense is really bad and she will only be happy if the name given to the algorithm is not close to SB at all. More specifically, basically what this line says that if any character um, in the algorithm's name is matching with SB, then Alice is not happy. And the next line says that if any character
in in the algorithm matches with Alice's name, then again Bob is not happy. So basically, the question is that is there a way to name the algorithm so that both Alice and Bob are happy? So the question here is basically based on strings. Let me take the first example. Uh, we have taken Dijkstra and Blossom. Okay. So now this is what Alice decided, and this is what Bob decided. Okay. So what I need to do now is that Bob will not be happy when Bob will not be happy if I find any of these characters in my algorithm's name. So I cannot have D, I cannot have I cannot have J, cannot have K, S, T, R, or A. I cannot have all these characters in my algorithm's name that I frame. Okay. Similarly, Alice will not be happy. Um, Alice will not be happy if I have any of these characters. So if I have B, L, O, S, S is repeated, so no point in writing it again. O again and M. So if I have any of these characters, Bob will not be happy. Alice will not be happy. And if I have any of these characters, then Bob will not be happy. So the algorithm's name, the of this question is that the algorithm's name shouldn't contain any of the above letters. Basically, the union of the above two sets. If I call this as one set and I call this as the another set, let me basically Bob disliking set return yes. Else I will return a no. Pretty simple, right? So that's what the code does. This is taking the number of test cases. Okay, let me also discuss about the time complexity. For the problem A, it was really simple. It's just constant time and just taking the input and just printing it. So that's why I didn't discuss. Here, uh, in for each test case, we are taking inputs of lengths of two strings. We are taking the input of the two strings. I've created a frequency array of 26 characters. It's not necessary to store the frequency because we just need to identify or measure whether the characters are there or not. So it's not necessary to calculate the frequency. You can be like calculate just a visited array kind of stuff, like int visited. That's also a good name. And then boolean is possible. I have taken a boolean variable to check whether I can form the name of the algorithm or not. So that this variable is for that. If it is possible to name the algorithm, it is possible to find the name of the algorithm or not. This variable will be is for that. Now I'm iterating through the first string, that is Alice's string, extracting each character. So this is for extracting each character. Now don't worry, this is Java code. I understand majority of you are doing C++. When the video will be up, I will be also adding C++ code there. So this is basically extracting the character at the ith position in the Alice string. So extracting character from the from Alice string. Okay. So and then basically this token is a character. So I'm converting into integer. This will give the ASCII value and I'm subtracting it with 97 so that I can boil it down to 26. What technically I'm doing is yeah, Anupam, it is possible to do it in single loop. Okay, wait, let me see the doubt. Isn't this possible to do it in single loop and two arrays using bool? Um, Single loop and two arrays using bool. Okay. So can you tell me the approach, your approach? I'm not getting that, Anupam. You can like, okay, okay.
Okay, so till then, I guess like initialize array to false, and if not equal, then true. Okay, so basically you are initializing an array to false, and yeah, you can do that. So basically you are telling that key, I will have an array, and it will be initialized to false, and I will mark the characters present as true, and any character, if it is like false or not there, I guess you are telling that approach. Yeah, you can do it in that way as well. In fact, this is like the similar way. I'm like counting it. You don't need to count it. I'm just counting it for Alice's string. Like the characters which are present, I'm just counting it up. Okay. Same for Bob's string. Okay. And if any of the characters frequency is zero, like if any character is not present, you is possible will be true. It will be possible to name the algorithm, and you will just break out of the loop. Otherwise, if it's not possible, like for all the characters, all the characters is present in either of the two strings, it means that it is not possible to name the algorithm, and in that case I will return a no. Okay, pretty simple stuff. Now, uh, yeah, you don't need to store the frequency. You can use a Boolean array and you can just mark it as true. And in that case, here you just need to check if the whatever, if present I is equal to is, if not present I, then is possible will be true, and you will break out. Yeah, that's also a nice approach. It's also a nice approach. Yeah. Okay, so this caret function is just extracting the character. Don't mind the language syntactical stuff. I will add the C++ code. Uh, you will get it. Okay. I hope this solution is clear. Any doubts? Okay. Okay. So I don't think there is any doubt. If you have doubts, you can ask me freely. Like these questions are like the first two questions are really simple. Uh, so okay. If you guys don't have any doubt, then I will move on to the next question. Yeah, so let's move on to the next question. Problem number C, not too far replacement. Now, this question has actually two approaches for solving it, but I will be discussing the sorting approach. Oh, okay. Uh, the n log n approach. You can solve this in n square as well because the constraints are less. I haven't added constraints here. But yeah, the constraints of the problem was less, and you could have solved this in n square as well. But I have solved this in n log n because this approach I found it to be really simple as compared to n square, and the code is really small as well. So yeah, let's read the problem and I will explain to you. So not too far replacement. You are given an array A of length n plus 1. So the length of the array here is n plus 1. Note, not n plus 1. So if there are n plus 1, if the length is n plus 1, there are n plus 1 elements, a1 to an. You can choose any index I such that the array element is less than equal to twice the last element. Okay. It's like even written here. That is, you can swap the element at index n plus 1 with some element of the array that's at most twice as large as it. You may perform this operation as many times as you like, even zero times. You have to find the minimum possible sum of the first n elements of A. So basically what I need to do, I need to find the minimum possible sum of first n elements of A. Now, okay, this line is really important. Technically what we need to do is find the minimum first n elements ka sum. So what does this imply? According to the problem, I have to basically, if I am able to find out the maximum maximum number
which I can replace. If I'm able to find out a number which I can replace, because here we are basically swapping, right? If, for example, let me take the test case, first test case, 5, 2, 3. So basically, here we have these many elements. I need to find the sum of the first of four elements. Now, what is the minimum sum? Minimum sum. The minimum sum that I want, I can get it by getting the total sum. Okay. So I get the total sum, which is basically 13, and I subtract with the maximum element that can be replaced. So maximum element that can be replaced. So this is what we need to, basically this is what we need to find, the maximum element that can be replaced. Now, if I cannot replace the number, then the answer will be the sum of first 10 elements. Otherwise, the answer will be total sum minus the max element that can be replaced. So basically, my concentration should be in finding this max element that can be replaced instead of finding this question. So I kind of change the question to this, the maximum element that can be replaced. So, what is the maximum element that can be replaced? Now, if the element is more than 2an plus 1, if the sum of the element is more than 2n plus 1, you cannot replace them, right? So, you have to basically find such an element such that it is less than 2 times the last element, as well as it has some kind of, like, it is some larger number. So it has to be less than 2 times an plus 1, that is last element, as well as it has to be something large, right? Now there is one more catch, that it is you can do this operation any number of times. You can swap this. You don't only have to do this once, you can do this any number of times, right? So it is completely possible that, for example here 3 into 2 is 6, right? So all the elements are less than this. So obviously, out of all the elements, I will replace the one which is larger, right? Which is 5, right? So 3, 2, 1, 2, and 5. So now here, again, because I have replaced with something which is larger than 3, all the elements, like before that, it will be less than the element with which I swap. So this sum, in this case, I just got the answer in one iteration. That is, in just one swapping, that I swapped 3 and 5, and I got the sum as 8 in this case, right? Now, but there might be cases in which you may have replaced it. For example, let me show the case. Okay, let me leave this as a case. I will show you the case. The second case is a really nice case. 16, the third case, 16, 4, 8, 2, 1. Okay, 16, 8, 4, 2, and 1. Here, in first iteration, you can clearly see that 16, 8, 4, they are more than 2, right? So you cannot replace any of this. But after one swapping, okay, the like the second, the first after the first iteration, this will be the array. Now again, I can swap this 2 with 4, because now 8 and 16 cannot be swapped, because this is more than 2 into 2, which is 4. So I can replace 4. So you can see that it is completely possible that I don't get the answer in the first go, right? 2, 1, and then 4. And then again, for 4, I have to repeat it with 8. And then for 8, I need to repeat it with 16. So after, like, last iteration, um, it will be like 8, 4, 2, 1, and then 16. Something like this will come. So again, the sum will be the sum of these four elements, which is basically 15. And I think 15 is the answer for the problem. Yeah. So how to solve this? As you saw, what you can do is, in each iteration, the brute force approach, the n square approach, in each iteration, find the number
basically the largest number. Okay, find the largest number which is less than 2 times the last number. You just need to iterate here. Okay, find the largest number which is less than 2n and just swap it with this. And at max, you have to do n iterations. Why you need to do n iterations? Because in one iteration, you will swap the first number with a different number. In the second iteration, it is guaranteed that you will not swap it with the previous number. Why is that the case? Because um, you are when you swap, you are basically swapping only when the number that you swapped with is bigger. Okay. So now there is no point in replacing the number with a smaller number. So that is why at max you can do n iterations and the length is of the array is n. So that will give you an n square approach. So this is the brute force approach. And finally, after you have swapped and or done everything, you just need to take the sum of the first n elements. Okay. So length of the array is n plus 1 technically, but it is not going to affect the time complexity. It's still going to be n square. So n into n plus 1, n square plus n, which is n square. So the key thing is you can do it this way. Most likely the solution will pass. But I have a better solution which works in n log n. What you can check is that every time I am swapping the number, only if I'm finding a larger number. So it's kind of I'm like swapping it with a number which is more, which is greater than me, right? Which is greater than the correct number. For example, I have initially 1. I swapped it with a number which is greater. It should be less than 2n, but it should be greater because otherwise there is no point of swapping because I'm either ways getting uh, the sum by just adding up the first n numbers. So I'm swapping it with a number which is greater than me. So why not sort the elements? But before sorting, I will first of all store the last element in a number. What is my initial last element? For example, my initial last element here is 1. After sorting, the array will be messed up. It will become 1, 2, 4, 8, and 16, right? So I will not be able to know where my, like, which was my last number. So this is my last number. Now, technically, what I will do is I will update the last number with, I will first of all start iterating in this sorted array and I will check if the current element is less than equal to the twice last element because that is the condition of swapping, right? And if that's the case and that last and this new array I is more, that is it is more than my current last element, then I will update my last element. Okay. So I will do this to find the optimal last element. For example, 1 is basically is less than equal to 2. So my last element initially was 1. So it's not going to swap because max of 1 and 1 is 1. Then 1 is 2 is less than equal to 2. It will swap it with 2. 4 is less than equal to for 4 is less than equal to 2 times 2. So again I will swap it with 4. Again 8 is less than equal to 4 times 2. So I will swap it with 8 and so on. So after iterating through all the arrays, I will find that 16 is the optimal last element. So after like iterating throughout the array, I found that 16 is the element which I can replace it with the uh, in my original array, I could have replaced this 16 with my last element. So now what I have done, I have just taken the sum and I've subtracted with the optimal last element and I have printed the sum. Like so, this part is pretty simple. The main part, the main key idea here is that I am first of all storing the last element and then I'm sorting the array. Really, really important. If you sort the array and then you use this, it's not going to work because you have lost the information of the last element because the last element can be anywhere in the sorted array, okay? Because the array is initially unsorted. Now I'm finding that element which is less than my twice the last element and I'm updating the last element as well constantly. So
in this way, I'm doing this updation in just big O of n time instead of doing it in n square time. So that is why, because of sorting, because of this arrays.sort in C++, you have sort vector dot begin and vector dot end. You can use that. You can use a vector instead of array as well. So arrays.sort, this works in basically n log n time, and this is basically big O n, and this is also big O of n. I have used long here. I don't think you need to use long because the constraints are not for the elements, they were till 1000, so integer will also work. So I'm here, this part is really simple. I'm just taking out the sum of the all elements, and I'm subtracting the last element, the optimum last element, basically the element which I wanted to get. This is what the element I'm subtracting, the maximum element that can be replaced. This is what I found out using sorting and using this loop. So any doubts, please tell, because I it's possible that this approach might be a bit confusing. So if there is no doubt, then that's great. But so any doubt? And also you will get the respective C++ code for this as well. Majority of the things will be same, instead of like, other than taking the input parts and all. Like here you will have some sorting function of STL, C++ STL, and this is most likely going to remain the same, and you will just use a max function here. And yeah, this part is mostly going to remain the same. You just see out some here. Yeah, so you will get this doc as well, complete doc of ABC as well as DEF. So yeah, that's about it from my part. Ansh will carry over. So if you guys have any doubts in my part, please respond. Otherwise, we can start with problem D. Ansh. Okay. One thing I want to tell you guys, if you have any doubt in any of the steps, you can freely interrupt in between, or either you can write in the chats. See, these sessions are for you only, right? So you should look forward to take the maximum benefit that you can take. Okay, so I guess we should start with the next problem. I'll quickly I'll quickly share you my screen. Okay, I hope my screen is visible. So this question is question number D for diff 4. Okay, and this question is one of those questions on CodeChef which you will be able to solve if you found the catch. I always say this in all the solution videos. Like you have to find out a catch in the problem, and the question is nothing but a few line of codes. Okay, so I have just broken down these things into four steps, like what the question says, what are the constraints of this question, what was the catch in this question, and how can we catch that particular catch. So quickly, you people just tell me if any of you were able to solve this. You can raise your hand if you have solved this question. All right, so I'm assuming none of you were able to solve this question. This question is actually a good question. You have things to learn. So I'll just quickly read the question for you. Uh, Okay, this is some different question, right? Just a second. Doc. Okay, I have pasted the question on this doc itself. So the question says is, you are given a binary string s of length n, and you can perform the following two-step operation on it. You can choose a non-empty contiguous substring of s,
And if the substring contains an odd number of ones, delete every zero in it. And if it contains an even number of ones, delete every one in it. So this is the main part of the question that you have to understand. Like for example, if I take any arbitrary string, let's say 1 0 1 0 1 0 1 0 1, okay, and if I choose this contiguous subarray, okay, let's say I take this subarray and I am separating it, okay. In this, you can see that number of ones are 3, which is odd. Number of ones are odd. So what you will do is, if it is odd, you will drop all the zeros. You can drop all the zeros. And if the number of ones are even, let's say I take this substring, okay, 1 0 and 1 0. So what will happen is, we can count the number of ones. Number of ones is 2, and if the number of ones is even, we can drop all the ones. Okay, so the substring reduces to this. And what is the objective of this question is, what we have to do is, we have to find the minimum possible length. Okay, minimum possible length of this string s. Okay, so I have taken these sample inputs. Uh, Sample inputs. Just a second, I'll just open that. Okay, I can take any arbitrary string. Let's say, for example, 1 0 1 0 1 0. Okay, so what you can do? Let's say we select this substring 0 1 0 at the end, last three. Okay, number of ones is odd, so you will drop all the zeros. Now you can select this substring. The number of ones is even, so you will drop both the ones. The last substring that remains is 1 0. You can select the entire string. The number of ones is odd, so you will drop 0. So length reduces to 1, and that was the actually the thing that was required, right? The minimum possible number, the minimum possible length. So one thing what you can do is, you can take different cases, like you can assume different substrings to carry on, right? But actually, how we have to think about this is that you have to first of all reduce the question. Like for example, if we have a long string of zeros, okay, then we have some ones, then we have some zeros, then one, then zeros, then ones. Then one thing that you have to think about in this question is, if there is at least one associated with any number of zeros, we can always reduce all the zeros and delete it. Let's say we are given with this string, okay, we have this string s is equal to this, okay. Let's say you catch this one and this entire substring at the back, which contains all the zeros and only one, okay. Then what you can do is, let's say I color this as red. You take this one and this entire substring with all the zeros. So what you will do is, the number of ones is 1, right, which is odd. So you subtract all the zeros in before this red one, right? Similarly, you can take this one and just color it red, whatever one I'm targeting. Okay, you can target all the zeros ahead of it. Okay, you count number of ones as 1 odd, you delete all the ones. Okay, and then let's say I catch this one. You can take this one, any one you want. I'll take this one. Okay, you count number of ones as 1, you delete all the zeros that follow it. Now what we are left with is all the ones. Okay, then simply what you can do is select any number of ones. Let's say I select 5 ones. Okay, so if number of ones is odd, you cannot do anything, right? But let's say I select this, any even length, I can completely reduce it. So what you have to find out in this question is simply one thing, that can I take down all the zeros of the string.
Yes, if you can take down all the zeros, you can delete all of them, right? And how will you make sure that all the zeros are taken down? Like, you need at least one, right? We need at least one one to reduce all the zeros. Okay, so let's say this input is actually wrong. I'll delete it. uh, I'll take you to the real test cases. Just a second. All right, I'm just cropping it. So let's say you have the first test case. Okay, one. So what you can do is you can select both the ones, है ना? And number of ones are even ones, so you can reduce it completely to a null string. So the length will be 0. Okay, that's how we solve the first test case. For the second test case, what we are going to do is we have 0, 1, 0, right? So I can take both the zeros into consideration. Let's say I take this substring. Okay, number of ones is odd. We drop the rightmost zero. Then we take this substring. We take into consideration that number of ones is odd again. Then we drop the left zero, and this reduces to length 1. So one thing is very monotonically visible here, and that is if my string contains at least one, okay, if my substring, uh, what are you asking? So if even one, so if even one's answer will be 0, if odd ones, then answer will be 1. You are almost correct, Anupam. Almost correct. There is one thing that you are missing here. Like for example, first of all, I'll tell my approach. Your approach is also same. I'll just explain that, and then I'll come back to you. Okay. So if my string has at least one ones, then I can take down all the zeros. Right. Once I have taken down all the zeros, then what you are saying, Anupam, will come into play. Yeah, you got that. If all the things are 0, then we cannot do anything. We'll have to print the entire length. Yes, you are right. So once we have taken down all the zeros, let's say this is some substring. We know there is at least one existing. So we can completely break down this into this. And then we count that number of ones are what? Number of ones are even. Then we comment that the length will be 0. If number of ones is even, then we'll comment that number of the length will be, this minimum length will be 1. So I'll just quickly take you to the code. Before that, I'll also explain you the third test for more clarity. Let's say we have 0, 1, 1, 0, 1. Okay. Now what I told you is if the string contains at least one, we have three ones, but we don't care. We need only at least one, right? So we can take down all the zeros, and we are left with this. Now, since the number of ones is odd, the length will be surely 1, the minimum length. And why? Because I just told you now that we can take down this pair. We have this even number of ones here, so we can take down this pair and it will reduce to 1 eventually. So that's all about in this problem. I'll quickly share you the code. I'll give you this snippet. Like, it actually is not a very tough question. It's a mediocre level question. All you have to think is why this thing should happen. How can I take down all the zeros? That's all it is. So what I have done is I have taken input. Okay. Then what I have done is I have just created a flag bool variable. And what is the work of this bool variable is it is detecting if at least one is present or not in the string. You can say if p is equal to 1, I am changing to true. Okay. So the main purpose of changing the value of flag to true is just detecting that if there is at least one present or not. And if it is present, I can take down all the zeros. And then simply I have passed down the statement that if number of ones are odd, answer is going to be 1. Else, else what I have to do is uh, I'll have to simply convert the entire string to its length.
let's say we have any string of 00000, that's what Anupam said in the starting. And if all the entire string is zero, it contains no ones, then we have nothing to do. We cannot even count number of ones. Number of ones will be zero, which is even. But in the even case, you were supposed to take down all the ones, and there are no ones present, so there is nothing we can do. Then we'll have to settle with the number of zeros. 3, 3, 6 to 8. So 8 will be the minimum length. So that's how this question is. Like, this is a simple question, just the catch that was there. What you are saying is the substring where there are all zeros and even and all are ones and odd. The output will be n. The substrings where there are all zeros and even. All zeros and even. Even what? Are you talking about even ones? AV, can you just clarify your question? I'm not able to No, sir, understand. it's clear. Thank you. Okay, 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 okay. Fine, fine. So that was all in this question. It wasn't much tough question. I'm saying this repeatedly because actually that's how it is. If you people have any further doubts, you can just let me know if any step is not clear to you, or else we can move on. Okay, I guess we should move on. Next question is normal is good. Have you guys attempted this question? Just tell me. किसी ने अटेम्प्ट किया है एक बार बता दो. सर अटेम्प्ट किया था बट द सब एरे पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी बिकॉज द प्रोसेस आई नो इज फ्रॉम रिकर्जन एंड उसका टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाता. अच्छा, तो तुम रिकर्सिवली चेक कर रहे थे पूरा? यस सर, बिकॉज सब और कोई मेरे को सब एरे निकालना आता नहीं है और कोई पॉसिबिलिटी. अच्छा अच्छा, गॉट इट. अच्छा वैसे any of you have problem with Hindi, you can just let me know. Otherwise, I'll just continue in Hindi. It's better I address your issues in Hindi. You'll be feeling more comfortable. ठीक है, तो मैं हिंदी में ही लेता हूँ इस चीज़ को. ओके, तो इस क्वेश्चन में मतलब हाँ, तुम आई नो तुम थोड़ा सा बैरेज वगैरह निकालने में फंस गए होगे. एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ उसमें. इस क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि तुम्हें सारे सब एरेज निकालने की ज़रूरत नहीं थी. इसमें तुम्हें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना था. ठीक है, उस कॉमन सेंस के यूज़ पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था. देखो, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. दिस इज द इजी वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम, द ओनली डिफरेंस इज द कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्या प्रॉब्लम था. तुम लोगों ने शायद हार्ड वर्जन रीड भी नहीं किया होगा, सो इट हार्डली मेक सेंस. ठीक है. एन एरे बी ऑफ लेंथ m is said to be normal if its mean equals to its median. ठीक है. मीन क्या होता है तुम्हें पता है, सब एरे का टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. है ना, इसमें बस वही एक्सप्लेनेशन दिया है. बस यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो तुम्हारा मीन है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर हो. इट कैन बी एनीथिंग ऑफ अ फ्रैक्शन और डेसिमल. ठीक है. और व्हाट द मीडियन इज डिफाइंड टू बी द एलिमेंट एट इंडेक्स m/2. तुम्हें बढ़िया से पता है कि मीडियन क्या है, मीन क्या है ना. तो इसमें तुम एक चीज़ कमेंट कर सकते थे कि मीडियन जो होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट्स एक इंटीजर हैं. ठीक है. और सेकंड चीज़ ये है कि तुम्हें उसे मीन से इक्विवेलेंट बताना है. तो तुम यहाँ पे ये चीज़ सोच सकते हो कि मीन तुम्हारा एक इंटीजर होना ही चाहिए. अदरवाइज ये इक्विवेलेंस तो हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि तुम पॉइंट और एक इंटीजर को तो ऐसे कंपेयर कर भी नहीं सकते. ठीक है. सेकंड पे बहुत इंटरेस्टिंग है और ब्यूटीफुल है कि तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है. एआई जो है वो 1 या 2 ही हो सकता है ना. इसमें सीधा सीधा बोल दिया है
कि तुम्हारा जो एरे ए है वो 1 से 2 के बीच में होगा और इंटीजर्स होगा। यू आर गिवन एन एरे ए कंटेनिंग एन इंटीजर्स, ठीक है, कोई पॉइंट वाली चीज नहीं आ रही है एरे में, और कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं कि 1 और 2 ही मिल रहा है तुम्हें बस, ठीक है। तो ये चीज बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर देती है अपने आप, कि तुम्हारे पास भाई सिर्फ 1 और 2 है, तो तुम्हारे पास आधी चिंता तो यही खत्म हो गई कि किस किस अलग अलग टाइप्स के तुम मीडियन निकाल सकते हो। तुम्हारे पास बस 1 और 2 ही है जो तुम्हें सोचना है एक्चुअली। ये मैं तुम्हें गूगल डॉक पे बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एरे लेके देता हूँ, ठीक है, 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1, ठीक है। कितने की लेंथ है इसकी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 लेंथ की एरे है। ऐसा ऐसा कुछ है। मैंने मेक श्योर किया है कि सारे एलिमेंट्स या तो 1 है या तो 2, ठीक है, क्योंकि यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि तुमको निकालना है कि योर मीडियन कैन आइदर बी 1 और 2, यही हो सकता है क्योंकि इसके अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंट भी नहीं है। तो अगर इफ मीडियन इज 1, लेट्स से तुम 1 चूज करते हो एज अ मीडियन, तुमने कुछ सवेरे पकड़ी, ठीक है, तुमने कुछ कुछ सवेरे बनाई और उसकी वजह से तुम्हारा जो मीडियन आ रहा था वो 1 आ रहा था। अब तुमको क्या करना है, मीन को भी 1 लाना है किसी भी हाल में। तुम्हारे पास अगर n एलिमेंट्स हैं, लेट्स से तुम्हारे पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सबका मीन जो आ रहा है वो m आ रहा है, मीन जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। एंड एलिमेंट्स तुम क्या क्या ले सकते हो, यू कैन टेक आइदर 1 और 2। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए उस एरे में? ओनली 1। बहुत बढ़िया, सिर्फ 1 होगा तभी पॉसिबल है भाई। लेट्स से मैंने 1 1 1 1 लिया, ठीक है, सारे 1 ले लिए m नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो इनका मीन क्या आएगा? 1 आएगा। अगर तुमने एटलीस्ट एक भी 2 कर दिया, उसके बाद चीजें बिगड़ जाएंगी अपने आप। उस एक 2 की वजह से तुम पॉइंट में जा सकते हो या फिर कुछ और वैल्यू आ सकती है। लेट्स से मैंने कोई और एरे ले ली, 1 1 1 2 2 2 ले ली, ठीक है। अब तुम्हारा मीन जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सारे 1s होंगे तो तुम्हारा मीडियन जो है वो तो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे 1 हैं और मीन भी 1 आएगा। तो ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चीज लिख दूंगा, इफ एनी सब एरे कंटेन्स ऑल द वंस, देन वो आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तुम रिकर्शन से जो सारे सब एरेज निकाल के कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं ठीक बात है, क्योंकि तुम एक एक सब एरे को देख रहे हो, लेकिन तुम सिंस सारे सब एरेज निकालने बैठ गए, इसीलिए तुम्हारी कोड में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इतना तो रिकर्सिव चल नहीं पाएगा भाई। कंस्ट्रेंट्स बहुत अजीब से इस क्वेश्चन के, तुम देखो n की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 5 तक जा सकती है, तो रिकर्शन फेल करेगा। तुम्हें एक एफिशिएंट कोड लिखना पड़ेगा इसके केस में, जिसकी मैं अभी अप्रोच तुम लोग को बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो केस हो गया व्हेन योर मीडियन इज गोइंग टू बी 1। अब सेकंड केस क्या आएगा, व्हेन योर मीडियन इज 2, ठीक है। सेकंड केस है कि जब तुम्हारा मीडियन जो है वो 2 है। अब 2 कैसे हो सकता है? लेट्स से तुमने एक एरे लिया, उसका मीडियन जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या उसमें एक भी 1 प्रेजेंट हो सकता है? क्या लगता है तुमको, बताओ। ओए बड़ी चोद के। देखो, अगर इसमें एक भी 1 प्रेजेंट है तो इसका कभी भी मीन जो है वो 2 नहीं आ पाएगा। अगर सारे एलिमेंट्स 2 हैं तभी इसका मीडियन विल बी 2 एंड मीन विल आल्सो बी इक्वल टू 2। सिर्फ यही केसेस में, ठीक है। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूँ,
सेकंड पॉइंट में इफ एनी सब एरेज कंटेन्स ऑल द टूस देन वो आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन तुम्हारा रिड्यूस हो चुका है। अब जैसे ये मैंने एग्जाम्पल टेस्ट केस लिया था, इसको तुमको क्या करना है, इसके सब एरेज निकालने हैं जहाँ पे सारे 2 हों या फिर सारे 1 हों। तो मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, मैंने इसको भी अलग किया, इसको भी और इसको भी। क्वेश्चन तुम्हारा अब छोटे छोटे सब एरेज में रिड्यूस हो गया है। अब बस तुमको ये निकालना है कि तुम इनका यूज करके कितने सब एरेज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने तुमको एक कोई भी सब एरे दे दिया 1 1 1 1 1, तो इसमें कितने 1 वाले सब एरेज तुम बना सकते हो? क्या लगता है तुम, लेट्स से तुम लेफ्ट से स्टार्ट करो, तो तुम क्या क्या ले सकते हो? तुम 1, मैं यहाँ पे इंडेक्सेस का यूज़ कर रहा हूँ 1 बेस, तुम 1,1 ले सकते हो, तुम 1,2 का सब एरे ले सकते हो। ऐसे करते करते तुम 1,5 तक जा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली तुम 2,2 ले सकते हो, तुम 2,3 ले सकते हो। ऐसे करते करते अब तो 2,5 जाओगे। ये एक बहुत सिंपल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता जाएगा, जो रिड्यूस होगा किस पे, 5 4,4, ठीक है, 4,5 और लास्ट में 5,5। तो इसमें कितने बन गए तुम्हारे? यहाँ से कितना आया 5, यहाँ से कितना आया 4, यहाँ से कितना आएगा 3, एक्चुअली 1 2 3 4 5, ठीक है 3, यहाँ से तुम्हारा आएगा 2, 4 से 2 आता है, यहाँ से तुम्हारा 3 आएगा, okay, यहाँ से तुम्हारे 2 आएंगे, यहाँ से तुम्हारा 1 आएगा। तो सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 + 1 5 2? ऑफ कोर्स तुम जेई देके आए हो, तुम्हें पता है ये ऐसे कैसे लिखा मैंने। ठीक है, तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे वंस टूज इनको सेग्रीगेट कर करके सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब मैं तुम लोगों को एक बार इसका कोड दिखाता हूँ। कोड देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिड्यूस किया और फिर कैसे सॉल्व किया। तुम्हें अप्रोच तो आई गेस समझ में आ गई होगी, तुम्हें छोटे छोटे सवेरेज निकाल के फिर उनको कैलकुलेट करना था। देखो इसके कोड में बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है, कोड में बस सिंपली मैंने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, वेक्टर बना के मैंने उसमें एक काउंटर वेरिएबल ले लिया सी एन। सी एन बस मुझे बता रहा है लेंथ ऑफ द करेंट सब एरे। ठीक है, आंसर है जो चीज़ मैं रिटर्न करूँगा। फिर उसके बाद लूप में मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मेरा प्रीवियस एलिमेंट अगर सेम नहीं है तो मेरा वो सब एरे खत्म हो गया, और उस सब एरे से जो आंसर जनरेट हो रहा है वो मैं आंसर में ऐड कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास मान लो 1 1 1 1 1 5 टाइम्स है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 2 है, फिर 1 है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सी एन की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 पे सी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 2 पे मेरी सी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। ऐसे करते करते आई इज इक्वल टू 6 पे तुम आओगे, आई इज इक्वल टू 5 पे तुम आओगे तो तुम देखोगे कि 2 और 1 अनइक्वल आ रहे हैं। तो तुम क्या करोगे, सी एन की जो प्रेजेंट की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे सी एन की वैल्यू 4 हो रही थी, यहाँ पे सी एन की वैल्यू 5 हो रही थी, तुम देखोगे सी एन की प्रेजेंट की वैल्यू पे ये फॉर्मूला चढ़ा के तुम आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम सी एन को वापस से 1 डिक्लेयर कर दो। तो इस सबस्ट्रिंग की वजह से 5 इंटू 6/2 मतलब 15 आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। सिमिलरली इसकी वजह से 6 इंक्लूड होगा और इसकी वजह से 1 इंक्लूड होगा। तो फाइनली तुम्हारा आंसर बनेगा कितना, 15 + 6 + 1 = 22। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस तुम्हें छोटे छोटे सबस्ट्रिंग्स में, सब एरेज में तोड़ना था इस क्वेश्चन को। इस प्रोसेस में यही हुआ है, फॉर लूप के अंदर मैंने यही किया है। बस वो कंपेयर करके मैंने सी एन की करंट की वैल्यू बना दी
फिर सी एन को अपडेट कर दिया, दैट्स इट। इस क्वेश्चन में यही है। सर आपने एक लास्ट में अलग से भी क्यों रन किया है? क्या चीज़ रन की है मैंने लास्ट में? अच्छा, लास्ट वाला सी एन मैंने इसलिए रन किया है, लेट्स से तुम्हारा कंपैरिजन, देखो तुम सी एन की वैल्यू को आंसर में कब ऐड कर रहे हो, जब ये कंपैरिजन जो है ये चीज़ हो पा रही है। जैसे मान लो मैंने खूब सारे वन लास्ट में ले लिए, ठीक है, तो इन लास्ट के वंस के लिए तो मैं कभी लास्ट में कंपैरिजन ही नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आते आते मेरी सी एन की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, इस वन के करस्पॉन्डिंग। अब मैं आगे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो लूप के अंदर जो मैं आंसर में ऐड कर रहा था सी एन इंटू सी एन प्लस वन बाई टू, लास्ट इंडेक्स के लिए वो करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिस हो जा रही है। तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं लूप से बाहर निकलते तुरंत उसको आंसर में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। अगर इन केस वो चीज़ छूट जाती है तो वो लास्ट में ऐड हो जाए इस चीज़ के लिए। समझ में आया अनुपम? नहीं आया तो दोबारा बता दूं मैं। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मोटा मोटी यही बात थी कि कैसे तुम इस चीज़ को सोच पाओ कि कैसे तुम इसको छोटे छोटे सबस्ट्रिंग सब एरेज में तोड़ो, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ बड़ी बात नहीं थी। किसी और को कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ओके, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनमीडियन। पहले मुझे ये बताओ किस किसने ये अटेम्प्ट किया है। if you guys have attempted then we should discuss this question, otherwise कोई point नहीं बनता है all of a sudden unattempted question को डिस्कस करने का। so just let me know अगर तुम में से किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो तो। किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है? अच्छा, नहीं किया हो तो भी बता दो। तुम लोगों ने अभी बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया है तो मुझे खैर इस क्वेश्चन में भी देखो, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो है तुमसे बोला जा रहा है कि एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ का। उस पे तुम ऑपरेशन क्या कर सकते हो, तुम एक कॉन्टिन्यूअस सब एरे पकड़ोगे, उसकी लेंथ ग्रेटर देन वन एंड ऑड होगी, तुम उसके मीडियन को डिलीट कर दोगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें थोड़ा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ डॉक पे, तुम लोग के लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। ये चीज़ थोड़ी सी एस्केलेट कर सकती है बिकॉज तुम लोगों ने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, तो मुझे सब कुछ स्क्रैच से समझाना पड़ेगा। लेट्स से तुमको कुछ एरे दे दिया मैंने, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें एक ऑड लेंथ की जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो तुम्हें एक ऑड लेंथ मोर देन वन की कॉन्टिन्यूअस सब एरे लेनी है और उसके मीडियन को हटा देना है। जैसे मैंने अगर वन टू थ्री लिया, ठीक है, थ्री लेंथ का है, ऑड लेंथ है, और थ्री है मोर देन वन है, इसका मीडियन क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो मैं इसको हटा दिया, ठीक है। टू था, मैंने टू को हटा दिया, ठीक है। मैंने टू थ्री वन पकड़ा, ठीक है, मैंने टू को हटा दिया,
मैंने मान लो 2 1 1 3 1 पकड़ा, इसका मीडियन क्या बनेगा? इसके एरे में 1 1 1 2 और 3 बन रहा है, मीडियन 1 आ रहा है। तो मैंने, हाँ इसमें एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि तुम्हें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को हटाना है अगर सेम आ रहा है, जैसे 1 1 1 तीनों में 1 आ रहा है ना, तो तुम 1 हटाना है जो कि लेफ्ट मोस्ट हो। तो मैंने ये वाली सवारी ली थी, तो इसमें लेफ्ट मोस्ट 1 क्या है? ये है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ऐसे करते 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 तुम्हें ये चीज़ निकालनी है कि क्या तुम एक एरे बना पा रहे हो। ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो तुमको बताना है कि तुम्हें कितने स्टेप्स लगे, और ये करने में तुम्हें कौन कौन सी इंडिसेस के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट साइड में तुम लोग के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तुमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो डिसहार्टन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें मैं तो चाहता था कि तुम लोग पहले से अटेम्प्ट करो अच्छे से, ताकि सबसे ज़्यादा लर्निंग हो पाए तुम लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा अगेन कि कैसे तुम इसे रिड्यूस करो। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 4 3 ले लिया, तो क्या तुम इसको अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो? और यू हैव द फ्रीडम ऑफ टेकिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी फ्रीडम भी है कि तुम कई सारे इसमें ऑपरेशन करके किसी भी तरीके से इसको सॉर्टेड बना सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो अप्रोच फॉलो होगी वो अप्रोच ऐसी है कि तुम्हें इसको रिड्यूस करना है टू लेंथ, रिड्यूस इट टू लेंथ 2। और ये लेंथ 2 में मैं क्यों रिड्यूस करने वाला हूँ? इसलिए रिड्यूस करना चाहता हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है कि एक मिनिमम एक मीडियन में एक एरे में एक मिनिमम हमेशा ही नॉन मीडियन एलिमेंट होगा, और एक मैक्सिमम एलिमेंट एक मीडियन में हमेशा नॉन मीडियन एलिमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस एरे में जो मैक्सिमम है 7, ठीक है, और मिनिमम है 1, तो तुम देख के बता सकते हो कि 7 तो कोई रिड्यूस कर ही नहीं सकता, चाहे तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, क्योंकि 7 हमेशा हर सब एरे में राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो तुम उसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते। तो 7 तो हमेशा तुम्हारे एक सॉर्टेड एरे में अवेलेबल होगा ही, ऑलवेज विल हैव 7 इन इट। सिमिलरली जो सबसे छोटा है 1, वो भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो सबसे लेफ्ट में रहेगा। वी ऑलवेज हैव 7 एंड 1 इन दिस। अब इसमें एक चीज और देखो कि 1 जो है वो 7 के पीछे अकर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये सारे एलिमेंट समवट हटाने की कोशिश करूं और एरे को 1 और 7 में रिड्यूस कर पाऊँ, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे आंसर मिल जाएगा, और यही चीज़ है जो मुझे चाहिए एट द एंड। इस अप्रोच इस अप्रोच का प्रूफ भी तुम्हें मैं दे सकता हूँ, बट अगेन प्रूफ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। सीधी सी बात है, काफ़ी लॉजिकल सी बात है कि पूरा एरे भाड़ में जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं है बाकी एलिमेंट से, मुझे सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम से मतलब है। ठीक है, अब इसमें एक -1 का केस है, अगर तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। -1 का केस ऐसा है कि अगर तुम कुछ भी कर लो और वो सॉर्ट ही ना हो पाए, तो आंसर में -1 तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने तुमको एक ऐसे दे दिया। ठीक है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते अब इसमें, हमेशा एक डिसेंडिंग एरे ही बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हें -1 प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दो टाइप की इंडेक्सेस का यूज़ करूँगा। पहला होगा मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, सेकंड होगा मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स। और सिंस इसमें ये वाली भी बात है कि यार हो सकता है कि बहुत सारे मिनिमम एलिमेंट्स हों, तो उसमें हम राइट मोस्ट लेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी राइट मोस्ट लेंगे। अगर तुम्हारा मैक्स इंडेक्स जो है वो छोटा आ गया मेन इंडेक्स के, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा मैक्सिमम वाला जो एलिमेंट है, मतलब कि 7, वो 1 से पहले अकर हो गया, तब तुम कुछ भी कर लो, तुम एक अच्छा सॉर्टेड एरे तैयार नहीं कर पाओगे। तो उस केस में तुम्हारा आंसर आएगा -1।
else in all other cases answer will exist. और तुम बस ये देखो कितने स्मार्टली हम लोग आंसर निकाल रहे हैं इसका। देखो, जैसे तुम्हें मैं कुछ भी एरे दे दूं, 1 2 4 6 7 1 2 5, ठीक है, तो इसका मिन इंड जो होगा, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है, और 1 का राइट मोस्ट इंडेक्स क्या है, 1 है, ठीक है। राइट मोस्ट इंडेक्स कितना हुआ, 0 1 2 3 4 5, 5 हुआ, ठीक है। अब इसमें मैक्स इंड क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, मैक्स इंड क्या होगा, मैक्स एलिमेंट क्या है, 7 है, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, 4 है। अब तुमने देखा कि तुम्हारा जो मिन इंडेक्स है वो मैक्स इंडेक्स से बड़ा आ गया, तो तुमने यहाँ पे -1 बोल दिया, ठीक है। एक तो ये केस हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसको मैं रेड से कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये -1 वाला केस है, इसीलिए मैं इसको रेड से कलर कर रहा हूँ। अब मैं ग्रीन वाले केस ले रहा हूँ जहाँ पे आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी एरे को मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूँ और मैं इस एरे में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, इसमें तो मिन इंडेक्स क्या बोलोगे, मिन इंडेक्स क्या है, 1 है मिनिमम एलिमेंट, मिन इंडेक्स उसका है राइट मोस्ट इंडेक्स ऑफ 1, जो कि है क्या, 1, ठीक है। मैक्स इंडेक्स क्या बोलोगे, मैक्सिमम एलिमेंट 7 है, उसका इंडेक्स क्या है, 2 2 4 6 है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि मैक्स इंडेक्स मिन इंडेक्स से ज्यादा है, तो आंसर विल एग्जिस्ट। अब एक चीज मैं करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करा दिया n-2, और मैंने बोल दिया कि हर बार जो पेयर मैं प्रिंट करूंगा वो 1 और 3 होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हर बार 1 और 3 करके मैं क्या कर लूंगा, तो एक चीज बताओ, अगर तुम्हारी एंटायर एरे ब्रेक डाउन हो रही है 1 और 7 में, तो 1 को तुम छू नहीं सकते थे, 1 हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, 7 को तुम छू नहीं सकते थे, 7 ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब तुम इस एरे में कहीं भी कुछ भी ऑपरेशन कर लो, 1 और 7 तो सर्वाइव कर जाएंगे एट द एंड, क्योंकि वो राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट है, तो इनको कोई रिड्यूस कर नहीं पाएगा, तो ये हमेशा एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम चाहे कोई भी सबस्ट्रिंग उठा के ऑपरेशन करने लग जाओ, तुम ये उठा लो, तुम ये उठा लो, या तुम ये उठा लो, और रिड्यूस करते जाओ, हमेशा चीज़ें जो रिड्यूस होंगी वो 1,7 पे जाके रुकेंगी। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली n-2 टाइम्स बस प्रिंट करा देना है 1 एंड 3, बस इतना सा कोड है, सीरियसली बस इतना सा ही कोड था ये, इसमें और कुछ भी नहीं था, बस ये तुम्हें निकालना था कि -1 का केस क्या है। एक बार वो डिटेक्ट हो गया तो तुम कुछ भी आर्बिट्रेरी रिडक्शंस करोगे, चीज़ें तुम्हारी 1,7 पे आके थम जाएंगी। बस ये था इस क्वेश्चन में। यू हैव यूज डीपी सर, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डीपी तो बिल्कुल भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और अगर इसमें डीपी होता तो मैं तुम्हें शायद अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, क्योंकि तुम लोग को अभी उतनी अच्छी पकड़ अभी होगी नहीं डीपी पे, आई गेस। तो इस क्वेश्चन में कोई डीपी वगैरह नहीं था। अच्छा, यू सॉ माय कोड टेम्पलेट, एक सेकंड भाई, कौन सा कोड टेम्पलेट देख लिया, डीपी तो नहीं था यार, मतलब मैंने सोचा था डीपी का, बट डीपी तो नहीं है इसमें, सिंपल था भाई, इसमें सिर्फ तुम्हें इंडेक्सेस के हिसाब से खेलना था, इसमें कैसे तुम डिटेक्ट कर रहे हो चीज़ों को। अनुपम, तुमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्या? अच्छा, हाँ चिल है। इस क्वेश्चन में देख, डीपी तो नहीं था ऑब्वियसली, डीपी होता तो मैं थोड़ा और बेटर तुम लोग को इसके बारे में बैकग्राउंड देता डीपी का, कि कैसे तुम सोच रहे हो स्टेट्स उसमें। हाउएवर इसमें डीपी नहीं है, सो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का। इसमें बस मतलब कोडशेफ के सारे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि खूब सारे ट्रायल ड्राई रन्स किया करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे अलग अलग टेस्ट केस नहीं लेता तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं इसको डायरेक्टली 1,3 ले लेके सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, कि मैं किसी भी बड़े से सवेरे को छोटे में 2 लेंथ के सवेरे में तोड़ सकता हूँ। तो तुमको बस अलग अलग केस ले लेके कैसे
क्या-क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो अपने गिवन इनपुट के साथ, उसको एक्सप्लोर करना होता है। एंड वन्स यू हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग देम, कोड शेफ के क्वेश्चंस तुमसे होने लग जाएँगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है? अभी तुमसे नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक्सपीरियंस के साथ क्लिक करते हैं। ये बात तो फॉर श्योर सच है। तो बस तुम लोग कंटिन्यू करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस देते रहो, कॉन्टेस्ट देते रहो, ये सारी चीज़ें। और सेशंस में भी मैं तुम्हें इनसाइट्स देते रहता हूँ कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। जैसे इस क्वेश्चंस के तुम अगर कंस्ट्रेंट्स देखोगे अनमीडियन के, तो कंस्ट्रेंट्स थोड़े से रिलैक्स्ड हैं 5000। तो इसमें कहीं न कहीं डीपी वाली फ़ील थी, लेकिन अभी तुम लोग पढ़े नहीं होगे उतना, तो मैंने वो एंगल एक्सप्लोर नहीं किया तुम लोग के लिए। बट अगेन इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ इंडेक्स का गेम था, तो अगर तुम्हें ये एकदम अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट्स ना हो, तो एक बार मुझे बता दो। आई डोंट वांट कि ये सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग चले, काफ़ी देर हो भी गई है ऑलरेडी। सो यू गाइस कैन टेल मी अबाउट दैट। अगर कोई और क्वेरी हो तुम्हें, तो यू कैन लेट मी नो। कोई भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम लोग कोडिंग रिलेटेड, तो बता सकते हो। किसी को कुछ पूछना है क्लासेस से रिलेटेड? हम क्लासेस सून स्टार्ट करने वाले हैं। सर, नॉर्मल इज गुड, प्रॉब्लम इज ओवर। नॉर्मल इज गुड, एक सेकेंड। नॉर्मल इज गुड का इजी पोर्शन मैंने अनमीडियन के पहले बताया था अभी तुमको। तुम हार्ड वर्जन कह रहे हो कि इजी वर्जन कह रहे हो? हार्ड वर्जन अभी थोड़ा आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा, सो मैंने उसे अभी मीट में डिस्कस नहीं किया, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता आज का डिस्कशन। तो उस चीज़ को तुम मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है? मीट में मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इसलिए। यू कैन आस्क मी इन पर्सनल, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उस क्वेश्चन में क्वेरीज नहीं होंगी, तो हमने वो क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं किया। मैक्सिमम लोगों के लिए आई गेस अनमीडिएट के पहले वाला जो क्वेश्चन था आज का, वहाँ तक की लिमिट थी, तो मैं वहीं तक एक्सपेक्ट कर रहा था एट दिस लेवल फ्रॉम यू गाइस। और किसी को कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह, विल बी स्टार्टिंग विद क्लासेस सून, होपफुली दिस वीकेंड। तो क्लास में रेगुलर रहना, ठीक है? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता ही है, तुम लोग रेगुलर लग भी रहे हो। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। इफ़ यू पीपल हैव क्वेरीज, लेट्स जस्ट, ठीक है?